So students, today we will start the new chapter, Thinkers, Beliefs and Building. Cultural Development 600 BCE to 600 Common Era. This is the fourth chapter. As we have already done the three chapters. Chapter first, leave it. Chapter second is about, what is the name of the chapter? King, Farmers and Town. And chapter 3 here is Kinship, caste. Yeah, very good. Kinship, caste and class. Kinship, caste and class. So here main reason of writing this chapter is we saw this whole chapter is we are talking about 600 BCE to 600 Common Era. Yes or no? And in this chapter, when we talk about the king, farmers and towns, okay, we saw the political and economic changes during this time period, 600 BC to 600 Common Era. And when we talk about the chapter number 3, we talk about the social changes during 600 BC to 600 Common Era. So now, the fourth chapter, it talk about the cultural changes or the cultural development. ठीक है, तो हमने पहले पॉलिटिकल इकोनॉमिक चेंजेस देखा, फिर हमने सामाजिक सोशल चेंजेस और सोशल डेवलपमेंट देखा, और अब हम कल्चरल डेवलपमेंट देखेंगे. टू नो अबाउट, टू स्टडी अबाउट द कल्चरल डेवलपमेंट. ओके, व्हाट इज इंपॉर्टेंट हियर कि हम कल्चरल डेवलपमेंट या हम उसकी संस्कृति के बारे में, संस्कृति का विकास, ठीक है, उसका अध्ययन हम किस पे करेंगे? हम थिंकर्स के बारे में जानेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट थिंकर्स, उनके बिलीफ, आइडियाज, विचार, एंड देन the buildings. Okay, so after reading this we will come to know about the cultural development during this time period. Okay, so when we talk about 6th century BCE, this was the time of the religious upheaval, okay, और एजुकेशन. इसका क्या मतलब हुआ? जब हम 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व 6th सेंचुरी बीसी की बात करते हैं, तो ये समय धार्मिक उथल-पुथल, ठीक है, जैसे हमने राजनीति में देखा, उसी समय आप देखते हैं धार्मिक उथल-पुथल या अपहेवल का टाइम, ठीक है, जैसे बहुत ज्यादा धर्म में, क्योंकि यहाँ पर हमें आंदोलन देखने को मिलेगा. It shaped the intellectual and religious movement. That's why we called it the religious upheaval. We will see here intellectual as well as the religious movement during this time period. Is this clear? So, when we talk about this religious upheaval, okay, अगर हम भारत की बात करते हैं, तो भारत के अलावा विश्व में भी उस समय धार्मिक क्या था? आंदोलन का समय था. व्हाट वाज द रीजन? जैसे हम भारत की बात करते हैं, तो आप देखते हैं जैनिज्म है कि नहीं है, और बुद्धिज्म कहीं था प्रारंभ हुआ है कि नहीं हुआ? और अगर हम विश्व की बात करते हैं, if we talk about the world as the religious upheaval, it took place over the world. So here comes what here is the in Iran. जैसे यहाँ पर है, भारत में है महावीर है, बुद्धा है, बुद्धिज्म जो धार्मिक आंदोलन लाए. ईरान में कौन है? जरास्थुरा, ओके, या जरास्थुर, ठीक है. अगर हम देखते हैं चाइना, कॉन्जी, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट ग्रीस, हियर प्लेटो, ठीक है, और कौन है इसमें? एरिस्टोटल, सोक्रेटिस इन ग्रीस, ठीक है. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, यू कैन टॉक अबाउट द ट्रेडिशन हियर, ओके. सो दिस इज अ टाइम पीरियड ऑफ रिलीजियस अपहेवल, अ न्यू रिलीजियस ट्रेडिशंस आर कमिंग. सो एक
India, when we talk about this religious upheaval, it took place in the region of the Middle Gangetic Plain in North India. ठीक है, ये upheaval कहाँ पे उठा? आप देखिए religious movement and traditions in the Middle Gangetic Plain, because we are reading about the North India. Already we have done the Shaivism, Bhaktism in medieval India, हमने उसमें कर लिया है. तो अभी हम उत्तरी भारत की बात करते हैं. ओके, तो यहाँ पे दो तरह के ट्रेडिशंस हमें देखने को मिला है इन द 6th century BC. So when we talk about the religious tradition, two types of tradition you can see in the 6th century BCE. One was those who were against of this Vedic religion. एक जो वैदिक है, हमने पूरा आपने देखा होगा जब चैप्टर किंगशिप कास्ट एंड क्लास कर रहे थे, तो वहां पर एक चीज कॉमन थी. हमने देखा था कि ब्राह्मणवाद था. जैसे हमने धर्मसूत्र पढ़ा था, वी रेड अबाउट धर्मसूत्र. ओके, सो ब्राह्मण लिव्स द प्रिंसिपल्स और द लॉ और द कोड ऑफ कंडक्ट इन धर्मसूत्र. So here there was one tradition who were against the Vedic religion, and one who were not against the Vedic religion, but they propagate their own principle. They propagate their own principle of what? डिविनिटी और डिवाइन, जिनकी ईश्वर को लेकर अपने कुछ सिद्धांत थे. यहाँ पे जो वैदिक रिलीजन के अगेंस्ट थे, they were who? Jainism and Buddhism. Okay, so they were against the Vedic religion, and then we saw they were not against the Vedic religion, but they propagated their own principle on divinity or divine. तो वो कौन थे? They were Shaivism. We read about Shaivism, Vaishnavism. So they were Shaivism and Vaishnavism. Is this clear? So now we talk about the historical sources. So from where we get the information about the cultural development. Okay? So when we talk about these historical sources, what is this? Literature. We talk about literature. अगर हम बात करते हैं historical sources, जब हम बोल रहे हैं आपको समझ में आ रहा है हम किस चीज के बारे में बोल रहे हैं? ऐतिहासिक स्रोत जो हमें किसके बारे में जानकारी दे रहा है? इस युग के बारे में, सभ्यता, इस संस्कृति के बारे में, इस समय के बारे में जानकारी दे रहा है. तो वो कौन कौन से सोर्स होंगे? What were the sources? You can see here. लिटरेचर है. लिटरेचर में कौन सा होगा? ऑब्वियसली वैदिक लिटरेचर होगा. और एक ऐसा यूनिट जहां पे हमें बुद्धिस्ट लिटरेचर, और दूसरा क्या होगा? जैनिज्म. ओके, दे आर हैविंग द लिटरेचर. सो दिस लिटरेचर गिविंग द इंफॉर्मेशन अबाउट दिस एज. क्या क्या इवेंट्स, क्या क्या घटनाएं हुई होंगी इस समय, उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं. दूसरा चीज क्या है, क्योंकि जैसे एक वर्ड आता है यहाँ पे बिल्डिंग, तो हम बिल्डिंग भी एक तरह से सोर्स ही है, क्योंकि बड़ी बिल्डिंग आ रहा है यहाँ पे. ठीक है, तो दूसरी सोर्सेस आ जाएगा. अगर हम बात करते हैं, आप ले लो बिल्डिंग. बिल्डिंग है जिसमें, ठीक है, जिसमें हम सबसे इंपॉर्टेंट बिल्डिंग पढ़ेंगे सांची स्तूप. ओके, वी विल रीड द मोस्ट इंपॉर्टेंट हियर सांची स्तूप. ओके, एंड देन कम्स हियर इंस्क्रिप्शंस, दैट इज द अनदर सोर्स. So, and the fourth are the sculptures that are made in the building. That the sculpture tell us about the stories. कि कोई अगर स्कल्पचर डेकोरेट किया गया तो वो कोई ना कोई स्टोरी बता रहा होगा, तो वो हमें उसके बारे में बताता है. ठीक है, गिव इंफॉर्मेशन अबाउट
That is the historical source. Okay. So now we talk about the Vedic literature. So what are they in the Vedic literature? Very important are the Vedas. How many Vedas are there? Vedic में 4. Okay. So you know the name? Rigved, Samved, Yajurved, Atharvaved. And the most ancient Vedas here are the Rigved. Very good. And when we talk about Rigved, it gives information about the political and the social life of आर्य. आर्य के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलता है? ऋग्वेद से. और ये सामवेद, यजुर्वेद and अथर्ववेद. It gives information about the later Vedic age. Later Vedic age after the Vedic age. Okay. तो इसका टाइम पीरियड क्या है? 1000 to 600 BC. Okay. So second important here are the, we can see, we get the information here are the unit of Vedic literature are the Brahmins. Okay. So it gives information about the rituals. Okay. When we talk about the Brahmin, ठीक है, ये हमें रिचुअल्स के बारे में बताता है. रिचुअल्स क्या होते हैं? रीति रिवाज. किस तरह से कोड्स ऑफ कंडक्ट हमने पढ़ा था ब्राह्मण में. हमने एक बहुत महत्वपूर्ण देखा था. फिर जब धर्मसूत्र के बारे में पूरा अध्ययन किया, वी हैव स्टडीड अबाउट धर्मसूत्र. देन कम्स द थर्ड हियर इज द, एंड इसी में हम देखते हैं अरण्यक एंड उपनिषद. ओके. इट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द दिस. इफ यू टॉक इट्स कम इन द वैदिक लिटरेचर, इट्स अ सोर्स. सो व्हेन वी टॉक अबाउट ब्राह्मण एंड अरण्यक, okay, Upanishad and Aranyaka, it gives information about the religion and what? Philosophy. है कि नहीं? और हमने एक महत्वपूर्ण पढ़ा था, अगर आपको याद होगा, स्मृति में हमने क्या पढ़ा था? In the previous chapter, मनुस्मृति. तो हमने क्या क्या देखा था? मनुस्मृति ने किस किस के बारे में बताया कि जैसे हमने चंडास का पढ़ा था, उनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस वाज मेंशन इन मनुस्मृति. इवन द मैरिजेस एंड इट कम अंडर धर्मसूत्र, है ना. तो यही हमने डिस्कस किया था मनुस्मृति. तो स्मृति जिसे हमने लॉ बुक भी कहा था ऑफ दैट टाइम. सो इट आल्सो गिव इंफॉर्मेशन. इट इज वन ऑफ द एविडेंसेस इफ इट आल्सो कम अंडर वैदिक लिटरेचर. And then comes the Puran. Puran 18 in numbers. So Puran में कौन कौन से पुराण है? हम यहाँ पे देखेंगे. मत्स्य पुराण हो गया, विष्णु, ठीक है, इट्स नॉट, गरुड़ हो गया, एंड मार्कंडेय, वायु. So these are what? These are the important Purans and important in terms of the historical significance. Okay, and then here you can see, if you talk about the Quran, it gives a through light on the social, economic, political and cultural life from the earliest to the Gupta period. ठीक है. अगर हम पुराण की बात कर रहे हैं, क्योंकि इसमें हम देख रहे हैं 18 पुराण हैं. हमने देखा कुछ पुराण ऐसे हैं जिनका ऐतिहासिक रूप से महत्व है. They are historically they are significant. Okay, और वो हमें किसके बारे में जानकारी दे रहे हैं? वो हमारे उसके समाज, उनकी अर्थव्यवस्था, उनकी राजनीति, संस्कृति, if we talk about politics, economic, social and cultural development or the changes that took place during the earliest period to the Gupta period. Okay, and then here comes that you have already read about Mahabharata. Okay, we have read that comes the epic. When we talk about the epic, the largest poem
One was the Mahabharata. Okay, the whole chapter was based on Mahabharata. The evidence, the sources were taken from Mahabharata. So this was the Vedic literature. Now we talk about the Buddhist literature. बात कर रहे हैं तो पहली चीज हमारे दिमाग में क्या आएगी कि हम बुद्धा के बारे में बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कहीं ना कहीं इसमें उनकी टीचिंग्स होंगी, टीचिंग ऑफ बुद्धा है कि नहीं। अब बुद्धा है और उनके साथ में हम देखते हैं उनके कंटेम्प्रेरी जो रूलर्स रहे होंगे या कंटेम्प्रेरी स्टेट रहे होंगे, स्पेशली वी टॉक अबाउट द मगध, ओके, द नॉर्दर्न बिहार and the eastern UP. ओके, इनके जो शासक रहे थे उनके बारे में भी जानकारी मिलती होगी, मिली है फ्रॉम दिस टेक्स्ट। ओके, सो हियर कम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टेक्स्ट इज द त्रिपिटक। ओके, पिटक, ठीक है। पिटक इज व्हाट, व्हेन वी टॉक अबाउट द पिटक, it deal with the philosophy matter. Okay, philosophical matter, philosophical या philosophy किसकी होगी, अगर हम कह रहे हैं दर्शन है या फिर philosophy है तो philosophy किसकी होगी, ऑब्वियस सी बात है। त्रिपिटक इसलिए कहते हैं, इसके तीन भाग हैं। Is this clear? Then we call it Tripitak. One is the Sutta Pitak, another one is the Vinay Pitak, and third is the Abhidham Pitak. So why we call it Tripitak? You can see here it is divided in, it has three volumes. One is the Sutta Pitak, Vinay Pitak and Abhidham Pitak. So when we talk about the Sutta Pitak and Abhidham Pitak, it talk about the Buddha teachings, and Vinay Pitak here is some way there is a rules and regulations to enter the sun or monastery. ठीक है, तो ये सिर्फ Vinay Pitak it talk about the rules and regulations. Another information you can see, other sources here are the Jatak. So have you heard about the Jatak? So Jatak are what? Are the tales or the stories. Story जो कि बुद्धा के पूर्व जन्म की कहानियां हैं। Okay, previous birth, story of previous birth, okay, of Buddha, and the time period is from the 5th century to 2nd century BC. So it also talk about the same political, social and cultural life of the people, either it is in the form of the stories. Okay, so this is another source, and here comes one also the Buddhist literature or the Buddhist source are from the Sri Lankan text. Sri Lankan text. Very important are the two texts, Mahavans and Deepavans. तो ये जो हम इतना सारा पढ़ रहे हैं, अभी हमने इतने सारे सोर्सेस देखे, आपने वैदिक लिटरेचर्स के देखिए, हम बुद्धिस्ट टेक्स्ट देख रहे हैं। अगर हम बात कर रहे हैं जातक की, अगर हम बात कर रहे हैं ये श्रीलंकन टेक्स्ट की, तो ये किसी न किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड की घटना के बारे में या इवेंट्स के बारे में हमें जानकारी दे रहा है। यही स्रोत वो माध्यम है जिसके कारण इतिहासकार ने पूरा इतिहास हमारे सामने रखा है, जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं, है कि नहीं है?
तो अगर ये है कि दिस आर श्रीलंकन टेक्स्ट, ये भी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बारे में हमें बता रहा है, ठीक है। यू कैन सी थ्रू लाइट ड्यूरिंग द 4th एंड द 5th सेंचुरी। तो हम यहाँ पे दे रहे हैं, हमारे पास पर्याप्त सोर्सेज, वी आर हैविंग एम्पल रिसोर्सेज, और वी आर हैविंग यू कैन सी एज हमें यहाँ पे 6th सेंचुरी से लेकर BC 6th सेंचुरी BC से लेकर हमें इंफॉर्मेशन कहाँ तक मिल रही है। अभी हम 4th to 5th सेंचुरी की बात कर रहे हैं, हमें इंफॉर्मेशन किसी न किसी सोर्स के रूप में मिल रहा है, किसी न किसी सोर्सेज के रूप में मिल रहा है। वी आर गेटिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज फॉर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड हियर। सो हियर कम्स another some texts are the you have heard about this Milenopano? Huh? There was a philosophical dialogue between there was a text, okay, where there was a dialogue between the Menander and the Buddhist monk Nakse, ठीक है। तो ऐसे करके छोटे even other texts are the Divyadan Aryamanjushi Munkar, okay, these are other texts which give information, which throw light on the time period, okay। So same with the Jainism also, Jaina literature, here comes agamas or agams, okay। इसमें भी ऑब्वियसली बात है, जैनाय का तो महावीर टीचिंग और तीर्थंकर के वो होंगे, ठीक है। तो यहाँ ये इसके भी इट इज आल्सो डिवाइडेड टू अगम एंड उद्वास। So these texts also give the information of the time period, and when we talk about the text, other texts here are the very important texts because it talk about Bhadra Bahu Charita, ठीक है। दूसरा महत्वपूर्ण टेक्स्ट कौन सा है? भद्र बाहुचरित ऑफ जैना लिटरेचर। उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है, कौन सी घटना है? दैट इज रिलेटेड विद चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त अपने जीवन के आखिरी समय में संन्यास ले लेते हैं और वो कहाँ चले जाते हैं? श्रवण बेला गोला, दैट इज इन कर्नाटक। और वहां वो संलेखन विधि से क्या करते हैं? प्राण त्याग करते हैं। तो व्हाट इज द संलेखन विधि? डू यू नो अबाउट द संलेखन विधि? जैनिज्म होता है जिसमें आप कहते हैं ना अन्न जल त्याग देते हैं और कब तक? मृत्यु आने तक, फास्ट अनटू डेथ। वी यूज द वर्ड फास्ट। सो दिस भद्र बाहुचरित इट गिव द इंसिडेंस दैट इज अबाउट चंद्रगुप्त मौर्य ऑफ which dynasty? Maurya dynasty, okay। So and now we will as we have worked on the literature, ठीक है। हमने तीन लिटरेचर देखे, सॉरी, वन इज द वैदिक, बुद्धिस्ट एंड जैन लिटरेचर। हमने जैना में थोड़ा सा करा है, जैन में हमने देखा अगम के दो भाग है, अंग और पूर्वा, एंड हमने देखा दूसरा टेक्स्ट भी है, क्योंकि हम मौर्य डायनेस्टी के ऊपर पढ़ रहे हैं तो हमारे जानना आवश्यक है दैट भद्र बाहुचरित we talk about the incident, that there is a important incident in this text, okay। Same with the Buddhist literature also, what we discuss in the Buddhist literature it comes that अगर हम बुद्धिस्ट बोले तो obviously बात है गौतम बुद्ध की टीचिंग से, ठीक है, और उनके कंटेम्पररी रूलर्स से, या जो समय मगध राज्य था या जिस जगह जो राज्य थे उनके विषय में जानकारी हमें मिलती है। एंड व्हाट आर द सोर्सेज हियर? वी टॉक अबाउट 3 पीटर, वन इज द सुत, विनय, अभिधम पीटर, एंड वी टॉक अबाउट द जातक एंड सम अदर टेक्स्ट आल्सो, ओके। एंड वैदिक लिटरेचर you can see Vedas, 4 Vedas, Brahman, Aranya, Upanishad, Smriti and Puran. So these are the what? Literature, okay। Now we talk about the very important that you have to study in your chapter is the stup, and we will go through Sachi stup, yes or no? Okay।